जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सबका चैंपियंस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। तो इस महीने के कुछ करंट अफेयर्स को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की करंट अफेयर्स के साथ। So, the first question is, which bank recently announced a grant of $400 million to the Maldives? किस बैंक ने हाल ही में मालदीव को $400 million देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं एक्सिम बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, and the correct answer is Exim Bank. Now came to the next question. In whose memory is National Women's Day celebrated on 13 February? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई। एंड द करेक्ट आंसर इज सरोजिनी नायडू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड द न्यू लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा? हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष का नया नेता किसे चुना गया? एंड द ऑप्शंस आर अधीर रंजन चौधरी, Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, and the last one is Sonia Gandhi. And the correct answer is Mallikarjun Kharge. Now here is the next question. Where did the Indian Navy conduct a practice called Tropex? भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स नामक एक अभ्यास कहाँ किया? And the options are Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean, Gulf of Oman. And the correct answer is Indian Ocean. Now the next question. When was Swami Dayanand Saraswati Jayanti celebrated recently? Swami Dayanand Saraswati Jayanti हाल ही में कब मनाई गई थी? And the options are 11 November, 11 February, 12 March, and the last one is 12 February. And the correct answer is 12 of February. Now the next question. When did India launched its मंगलयान? भारत ने अपना मंगलयान कब लॉन्च किया? 2011, 2014, 1998, 2013. And the correct answer is 2013. And now the next one. Where will India's first dolphin research center be built? भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? And the options are Patna, Varanasi, Lucknow, New Delhi. And the correct answer is Patna. Here is the next question. Recently, India presented 2000 metric ton of rice to which country? हाल ही में भारत ने किस देश को 2000 metric ton चावल पेश किया? And the options are South Korea, Iran, Syria, Iraq. And the correct answer is Syria. Here is the next question. Recently, World Bank announced $100 million for which project of छत्तीसगढ़? हाल ही में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ की किस परियोजना के लिए $100 million देने की घोषणा करी है? एंड द ऑप्शंस आर नयम, चिराग, उजाला, सहयोग. एंड द करेक्ट आंसर इज चिराग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was appointed the new Director General of the International Solar Alliance? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर अजय माथुर, रवि रंजन, सुचेत कृष्णन, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज अजय माथुर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which state government approved the construction of COVID War Memorial? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉर मेमोरियल के निर्माण को मंजूरी दी है? एंड द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. With which country did the US extend the New START nuclear cancellation treaty for 5 years? अमेरिका ने किस देश के साथ 5 वर्षों के लिए नई स्टार्ट परमाणु नीति रद्द करने की संधि का विस्तार किया है? एंड द ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, रशिया, फ्रांस. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रशिया. एंड नाउ हियर इज द लास्ट क्वेश्चन. Recently, who started the अनमोल भारत प्रोग्राम? हाल ही में अनमोल भारत कार्यक्रम किसने शुरू किया? एंड द ऑप्शंस आर वीज़ा, रुपया, मास्टर कार्ड, IOCL. एंड द करेक्ट आंसर इज मास्टर कार्ड. सो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स.
उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आते हैं तो एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।